Assalamu alaikum, adab. Good afternoon, dear students. As you know that we have completed the narration or direct indirect in 4 to 5 lectures, and today we will do the exercise. That means that today you have to do the exercise yourself. First of all, I will show you some examples so that you will get the confidence. ये कुछ examples हैं, तो यहाँ इसका आंसर भी यहाँ ही है, तो आपको मतलब ये खुद ही देखने हैं कि आपको कितना आ रहा है, कि जो रूल्स आपने पढ़े हैं वो कहाँ अप्लाई होते हैं, कैसे होते हैं। फिर इसके बाद आपको एक्सरसाइज भी करनी है, दैट यू हैव टू डू अपॉन द कॉपी. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ बेटर इफ़ यू विल राइट दीज exercise, these sentences upon your notebook and without answer, and then you will see the answers after giving the solution, after giving the correct answers. मुझे उम्मीद है कि कम से कम आप take the screenshot, whatever I will show you, please take the screenshot of that so that you will solve that. One second, take it a screenshot whatever I will show you. जैसे कि आपको मालूम है, जैसे कि हम पहले ही करते हैं. हाँ, take it a screenshot and solve then. There the answers are given. Rahul says the teacher is ill. बहुत आसान है. यहाँ says है, आपको मालूम है जब says होगा तो टेंशन नहीं होगी क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है. Rahul says that the teacher is ill. जो वहाँ है वही है, बस ऐड हमने किया है दैट और कामाज को ओमिट किया है. बहुत आसान है, बहुत आसान है. मैं बार बार कह रहा हूँ कि आज आपको खुद करना है. वन शुड बी एट लीस्ट, वन शुड नॉट डिसीव वन सेल्फ. आज आप अगर नहीं करेंगे फिर उसका मायने है कि आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, वो ठीक नहीं हो रहा है. बिकॉज यू आर मेच्योर, डू द एक्सरसाइज, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट. प्रैक्टिस से ही आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं और कितने पानी के ऊपर हैं. प्लीज़ डू द एक्सरसाइज, बहुत आसान है. शी सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट. मैंने आपको कहा है आपको कि जब यूनिवर्सल ट्रूथ होगा तो उस वक्त भी कोई टेंशन नहीं. शी सेड दैट इस्तेमाल करना है, बाकी वही का वही लिखना है. द सन राइजेज इन द ईस्ट, बहुत आसान है. शशि सेड आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क. यहाँ टेंस चेंज होगी क्योंकि शशि सेड ये पास्ट में, फिर कंजक्शन दैट इस्तेमाल होगा. शी हैड कंप्लीटेड, माई होगा ये फर्स्ट पर्सन है, ये होगा सब्जेक्ट यहाँ शशि है, शशि के बदले हम हर लिखेंगे, हर वर्क. बहुत आसान है, बहुत आसान है. दे सेड वी वॉन द मैच, बहुत आसान है. एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस है. दे सेड दैट, वेरी गुड, दैट इस्तेमाल करना है. वी के बदले दे, यानी कि ये फर्स्ट पर्सन है, ये चेंज होगा सब्जेक्ट में दे. यहाँ पास्ट इंडिफिनिट है, ये पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा. दे हैड वॉन द मैच, वेरी गुड, बहुत आसान है, बहुत आसान है. यू सेड टू हर आई हैव कॉल्ड माई फ्रेंड्स, बहुत आसान है. सेड टू है, सेड टू तो आपको मालूम है, मैंने आपको कहा है कि जब ऑब्जेक्ट भी होगा तो उस वक्त सेड टू चेंज होता है टोल्ड में. यू टोल्ड हर दैट, आई चेंज होगा, ये फर्स्ट पर्सन है, ये सब्जेक्ट है यानी कि यू में चेंज होगा. यू यहाँ हैव है, हैव हैड में चेंज होगा यानी कि प्रेजेंट इंडिफिनिट पास्ट इंडिफिनिट में चेंज होगा. हैड कॉल्ड योर फ्रेंड्स, बहुत आसान है. आई सेड आई शैल लीव चेन्नई सोन, बहुत आसान है. आई सेड दैट आई शुड, शैल मैंने आपको पहले ही कहा है, शैल शुड में चेंज होता है, बाकी वही है. मुझे उम्मीद है अब आपको ये खुद ही आएंगे. यू कैन डू दीज योर सेल्फ. टेक द स्क्रीन शॉट. 1 सेकेंड. हाँ, और भी कुछ है. टेक द स्क्रीन शॉट, टेक इट स्क्रीन शॉट and solve them, because I hope that you have taken the screenshot and you will solve them. बहुत आसान है, बहुत आसान है. टीना said to रोहन, will you help me today?
कुछ नहीं करना है, तीना सेट के बदले आस्क्ड रोहन इफ, क्योंकि यहाँ आपको मैंने पहले ही कहा है जब डब्ल्यू यानी कि मॉडल ऑक्सिलरी से इंटरोगेटिव क्वेश्चन स्टार्ट हो गया उस वक्त हम इस इफ़ या वेदर इस्तेमाल करते हैं। इफ़ अब यू है, यू तो सीधी सी बात है, ये सेकंड यानी कि सेकंड पर्सन है, ये ऑब्जेक्ट रोहन में चेंज होगा, यानी कि रोहन की जगह अब हम ही लिखेंगे। विल मैंने आपको बार बार कहा है वुड में चेंज होता है। हेल्प मी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन आपको मालूम है ये सब्जेक्ट में चेंज होगा, यानी कि तीना तीना यहाँ हर। टुडे आपको मैंने पहले ही कहा है दैट डे में चेंज होता है, बहुत आसान है। प्लीज़ डू दिस, प्लीज़ डू दिस। हाँ, ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, बहुत आसान है, ये क्वेश्चन है। सेड टू आस्क्ड में चेंज होगा, ही आस्क्ड मी। तो आपको मैंने कहा है कि यहाँ कंजक्शन दैट इस्तेमाल नहीं होता है, जब डब्ल्यू एच वर्ड्स होंगे कोई कंजक्शन नहीं इस्तेमाल होता है। व्हाट यू सेकंड पर्सन है, ये यहाँ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज होगा, मी के बदले आई। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में चेंज होगा। वेरी गुड, वाज डूइंग, वेरी गुड वेरी गुड। मुझे उम्मीद है यू कैन डू योर सेल्फ नाउ। टेक द स्क्रीन शॉट or you can pause the video also. Take the screenshot. हाँ, now अब there are some examples which you have to solve. आप कुछ examples हैं जो आपको solve करने हैं। You have to do it yourself, क्योंकि बार बार मैंने आपको कहा है at least you should not deceive yourself, you should not cheat yourself। बहुत आसान है, बहुत आसान है। yes, take it a screenshot. I hope that you have taken the screenshot and you have written all the examples upon the copy and maybe you have paused. Now please see the answers. Now I will show you the answers. Yes, these are its answers. But please first of all do the exercise. Don't deceive yourself, because you are mature, you are not kids. After doing the exercise, tally the answers and check your level. Yes, this is another exercise. Please take it a screenshot. Take it a screenshot. Yes, I hope that you have taken the screenshots. This is another exercise. Take it a screenshot also. I always says you that you have not need any book from the market. So many students always message me which book we will bring from the market. I always says you that on one book one portion is very good and on another there may be another one, and for that I check and I consult all the books, all the grammars. I told you that I have hundreds of the grammars, but you have to do. Please now tally your answers with this. I hope that you may have done. हाँ, okay, but please do the exercise and check your level. If anybody wants more exercise, he can message me and I will send him more exercise. I have a large quantity of material where you can solve the exercise. Okay, thanks. But one thing please, I always says you that I have another channel whose name is English for All by Saleem Sir's Academy.
Please subscribe their channel and share their channel with your nears and dears, with your relatives, with your classmates. In that channel, I have completed all the English of all the classes, matric, 12th, graduation, Kashmir University, Jammu University, IGNO, and also there is one playlist in which I teach English in simple Kashmiri language. Also, now these days I have started the computer and Kashmir general knowledge. There are 2 separate playlists for that also. Please watch their channel also and share and subscribe their channel and write your feedback. Thanks. Okay, thanks.